Hi everyone, welcome back to रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज़। हमने पिछले दो सीरीज़ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पूरी थ्योरी कवर की थी, जिसमें लास्ट में हमने चार इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे। फर्स्ट इज़ द ब्रह्मास्त्र, द अजम्पशन थ्योरी, और जब भी हम अज्यूम कर रहे होंगे हमने कहा था कि हम वैलिडेट भी उसको कर रहे होंगे साथ ब साथ, करेक्ट। फिर हमने और चीज़ें देखी थी, राइट। सो हमने पूरा जो लेक्चर डिवोट किया था थ्योरी पे। अब हम उस थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए, उस थ्योरी को कंसेप्चुअल और इम्प्लीमेंटेशन करने का, उस थ्योरी को आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगेन ये क्वेश्चंस भी डिवाइड इनटू 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस कि जो भी थ्योरी पढ़ा था क्या उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कंसेप्ट क्या क्लियर हैं आपके, रिवीजन हो रहा है कंसेप्ट का नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक गो में थ्योरी पूरा कंप्लीट, देन वी सॉल्व क्वेश्चन इन चंक्स, राइट। ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक आपके पास है, यू मस्ट बी सॉल्विंग इट, राइट। कहीं भी कोई इशू आता है तो आप कभी पूछ सकते हैं, लेकिन इन सीरीज में हम एक गो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बेसिक से उठाएंगे, ठीक है। और जितने भी आपको डाउट है हम पूछ रहे होंगे, करेक्ट। पीपल दोज हु आर watching it on YouTube and other platforms. So here we'll be solving some basic questions in this series, and if you have to solve all question related to ratio and proportion from the question bank, you have to subscribe the channel, you have to take the classes from the applications, right. Web application can be a mobile applications, correct. Okay, so without wasting much time, let's start with the question solving. So let's start. जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इट सेज पी क्यू आर एस आर प्रोपोर्शनल, देन पी माइनस क्यू पी माइनस आर डिवाइडेड बाई पी इक्वल्स टू, एंड दे हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। हमेशा इन तरह के क्वेश्चन से आप कभी डरिए मत, और भगवान से ये दुआ करिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हैं। जब भी आपको अर्थमेटिक काइंड ऑफ क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रोपोर्शन के फॉर्म में, it is very easy to solve with the help of options. So आपकी अप्रोच इन क्वेश्चंस में क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच इन क्वेश्चंस में क्या होनी चाहिए कि आप क्या करें, पी क्यू आर एस आर प्रोपोर्शनल अगर आप देखें, दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप अजम्पशन थ्योरी का यूज़ करें। अजम्पशन थ्योरी क्या कहती है कि आप पी की वैल्यू कुछ मान लें, क्यू की वैल्यू आर कुछ मान लें, आर की वैल्यू कुछ मान लें और एस की वैल्यू कुछ मान लें। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, क्या अजम्पशन थ्योरी हमारा ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को यूज़ करने से पहले क्या हम बेसिक चेकलिस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, करेक्ट। कई बार मैंने क्या देखा है कि कुछ बच्चे p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, s इक्वल्स टू 4 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाला बेवकूफ़ नहीं है कि उसने क्वेश्चन बनाया। द रीज़न इज दे हैव गिवन अ कंडीशन दैट P, Q, R, S are proportional. What does it means? It means that P upon Q is equals to R upon S. आपको अब ऐसी वैल्यूज उठानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टेक P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 1, R इज इक्वल्स टू 4 एंड S इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं अब ये तो मैंने एजम्पशन थ्योरी लगाई, क्या मैं अगर इसको वैलिडेट करूं तो क्या बात सच है? क्या 2/1 इक्वल टू 4/2, 2/1 इक्वल टू 4/2, क्या बात ही सही है? एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू। अब क्या होता है कि हम थंब रूल बना लेते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 2 4 1 2 ले लेंगे। ऐसा भी नहीं रखना, आपकी मर्जी है। अगर आपके इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स दी है क्वेश्चन वाले ने, तो आप कुछ और सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं पी को 8, क्यू को 4 ले सकता हूँ, और R और S को 16 और 8 ले सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अगेन द रेशियो इज मेंटेन्ड, अगेन वी आर वैलिडेटिंग इट इफ वी आर अज्यूमिंग इट, नॉट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो लेट मी टेक विद दिस वैल्यू एंड सॉल्व इट। नाउ आप ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर आप ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि पहला ऑप्शन आ गया आपका 2 + 4 + 2, विच इज़ वॉट 8, विच इज़ नॉट द केस, sorry. So 2 + 4 2 is 8. Second, so you can put the values here, so because that you need to find the answer.
So it is p minus q. P minus q is how much? 2 minus 1. And p minus r. P minus r is this. Upon what is it? P. Can I write 2 minus 1 is 1 and 2 minus 2 upon 2, which is nothing but minus 1? Not understanding what is happening here. Are you getting it? So I have just got the value of this equation. Now I am putting it here. So P is 2, Q is 1, P is 2, R is 4. 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 is minus 2, upon 2 is minus 1 is the answer. So first is 8. So it's not the case. Because it's all positive. So I don't need to calculate also because answer is negative and my all numbers, assumed numbers are positive. Can I have to check this? P plus Q plus R plus S? No, because again it is a positive number. P plus Q plus R plus S is again a positive number. But if you want to check, you can check 1 plus 2 plus 4 plus 2. As simple as that. Third, so it is P plus S minus Q minus R. So if you check it here, so answer is minus 1. So it is matching. So this is the answer. But for your, just to get the confirmation, just check the other ratio. P is 2, R is 4, minus 1, minus 2. So minus 3 and 6, it is minus 3. Correct? So answer is this. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आपको क्या सॉल्व करना है? आप अज्यूम कीजिए, लेकिन assumption should also be validated. That's my point over here. Okay, ये क्वेश्चन बहुत इजी था. Okay, let's go to next question. The question 2 says, what number must be added in each term of the fraction 7 by 13 so that it becomes 5 is to 17? आपको क्या नंबर ऐड करना चाहिए दोनों टर्म्स में so that the thing becomes 5 is to 17, right? So best example is, let's say you add the x. So 31 plus x is equals to 5 by 17. Can you solve this equation? 17 upon 7 plus x is equals to 5 times 31 plus x. क्या equation को x में solve कर लेंगे आप? Options में दे देता हूँ. Tell me the answer fast. So the first option is 9, 10, 11, 3. Find out. So I can see it's very easy, right? 17 into 7 plus 17x is equals to 31 into 5 plus 5x. So इधर से इधर कटेगा तो छम्मा छम्मा. So what you get, 12x is equals to 31 5 minus 17 7. Can you solve for x? So 31 5 minus 17 7 upon 12. Calculation is yours. क्या ये भी कोई easy question था? क्या solve कर लेंगे इसको भी? नहीं आया. Right? So let's move to the new question. Question number 3. The question number 3 says, x varies inversely as y cube minus 1 and is equal to 3 when y equal to 2. Find x when y equal to 4. बहुत आसान क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस में भी ध्यान से सोचिए. हमने प्रपोर्शन में बात की थी तो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये सब की कहानी बताई थी कि x वेरी इन्वर्सली एज y क्यूब मीन्स x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब माइनस 1. लाइक दिस वी रिप्रेजेंट n इज इक्वल टू 3 व्हेन y इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल्स टू 3 व्हेन y इक्वल टू 2. सो अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, कैन आई राइट k इक्वल टू y क्यूब माइनस 1? क्या हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वी रिप्रेजेंट लाइक दिस एंड फॉर इक्वल वी अज्यूम वन कांस्टेंट फॉर इट. एक कांस्टेंट को हम ले लेते हैं. लेट कांस्टेंट हियर बी व्हाट? k. अब इसको हमको सॉल्व करना है. सो एक कोऑर्डिनेट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. 3 वेरिएबल्स हैं, 2 गिवन है. कैन आई फाइंड वन मोर? सो k कैन आई राइट हियर? सो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k. 2 into 2 into 2 2 2 4 4 2 8 minus 1. So can I write 3 into 7 is equals to k. So k is equals to how much? 21. Can I write this?
Now what they are asking, find x when y equal to 4. So you know now from this equation, put this equations. So you know k, you know y, but you need to find what? X. Can you find x? X is equals to 21 upon 4 cube minus 1. Can you find the answer? क्या इजी क्वेश्चन था. सो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका है. अगर डायरेक्टली इफ दिस इज दैट इट हियर एक्स वेरीज इनवर्सली, अगर क्वेश्चन कह रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन व्हाट विल यू हैव डन. सो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 1 टाइम्स के. करेक्ट. ये पूरे थ्योरी हम क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़कर आए हैं इसका. नाउ वी आर सीइंग द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. क्या बात, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन आपको थ्योरी रिवाइज कराएंगे और कुछ नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ एक्स वेरीज एज वाई, एक्स वेरीज एज वाई मीन्स एक्स वेरीज एज वाई, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है. एक्स वेरीज एज वाई मीन्स एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, मीन्स एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड वाई इक्वल टू 4 when x is equals to 12. So they have given one coordinate x equals to 12, y equal to 4, and they are asking x value when y is equals to 15. So it's a easy question. क्या सॉल्व खुद कर लेंगे. So x is direct proportional to y. Can I write x equals to ky? So they have given one coordinate. Can I put that x 4 times 4? Can I find value of 4 is how much? 12 by 4, that is 3. Now what they are asking is x value. Put it here. Use this equation. X is equals to 3 times 15. Can you find the answer now? क्या बहुत easy question था. क्या इससे सरल questions आ सकते हैं? Correct. Now next question. Let's see what happens. Now question 5 says x varies jointly as y and z and x is equals to 6 when y equal to 3 and z equal to 2. Find x when y equal to 5 and z equal to 7. Now what it says that jointly means all together. So x vary jointly as yz. So jointly yz like this. X vary jointly as y and z. So can I write x is equals to kyz? You are not understanding. Now x is equals to 6 when y is equals to 3 and z is equals to 2. Can I find k from here? Can anyone of you may tell me the k value from here? So 6 is equals to k times 3 into 2. I am getting k is 1. Now what they are asking, again same question. So they are asking find x when y is equals to 5 and z is equals to 7. Can you solve for me 1 into 5 into 7. How much it is? 35. Correct? Are you understanding it? So what you are doing is, here you are assuming also, but if you see, now let me clear also. If you are using this 35 and k equal to 1, and again if you validate also all these things, you must get the same answer. That is, अगर आप ऐसे इसको मान के चलेंगे, x की वैल्यू को दिस, y की वैल्यू को 5, 7 की वैल्यू को दिस, यू विल गेट k. यू शुड वैलिडेट ऑल्सो ना, दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, उसको तो हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ओके, let's solve the next question. It's a very good question. Okay, I will be solving this question, or you want to solve it? It's exactly same, right? So it says that if x varies as y directly and z inversely. So what's the difference here and here? Here x was also varying as y and z together. So if x is increasing, y will also increase and z will also increase. If x will decrease, here y will also decrease and z will also decrease. But here what it says, x varies as y directly. With y there is a direct relation, whereas with z it's an inverse relation. That's the difference between the question. So what is mean if I write, so x
it's directly proportional, and for y it is inversely proportional. So if I have to combine, can I combine y by z? So with x it varies y directly and z inversely. Now can you solve this question? So let me solve this question. Okay, so from this I get x equals to k times y by z. Any issues with that? Okay, now x is equals to 12 when y is equals to 3. So we have x equals to 12 and y is equals to 3. Now can you solve this question from here? Okay, so generally what happens, how people solve it. Okay, let me write with red, right? So what I'll do is I'll take like this, I'll use 1 equation. So x equals to ky, so 12 equals to k times y, that is 3, so k becomes 4, right? Then x is equals to k times z, so I'll write x is 12 and k you already know, sorry. So you need to find z. What's the question? You need to find z when x equals to 4 and y equal to 5. You need to find z when x equals to 4 and y equal to 5. This is 4 actually, right? So you got k. Now you will solve this relation, that is x equals to k by z and x is equals to k. What is it? 4. Z is how much? You need to find. And what is x? X is 4. So you get z as 1, right? Which is wrong. The reason is, can you tell me where we went wrong here? See, because when you write x equals to 12 and y equal to 3, or when you are solving this equation, if you validate this relation, you are failing. Check it. So when you write z equal to 1 and x is equal to 4 and k is 1, y is how much? 5. So is this equation matching? No. Therefore what happens is, when x equals to ky by z, you are only having two variable, means you know the value of two variables, this and this, but there were two more unknowns. So you cannot find the solution, because there are 4 variables but we know the value of only 2 variables. यहाँ 4 वेरिएबल थे लेकिन हमें ज्ञात सिर्फ 2 ही वेरिएबल की वैल्यू का था. क्या ये क्वेश्चन मस्त था? ये इस तरह के क्वेश्चन मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम मस्त ला देते हैं. अजम्पशन थ्योरी लगा तो देते हैं बट वी फॉरगेट्स कि हमें वैलिडेट भी करना है. अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते तो आपको समझ में आ जाता कि 2 की वैल्यू है. दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक श्योर कि आप लगातार ये 2-3 क्वेश्चंस करें और यहाँ आके अटक जाएं. कई लोगों ने इसको अलग तरीके से भी सॉल्व किया होगा, कर दिया होगा, बट दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेज दैट divide 1400 into 3 parts in such a way that half of the first part, so 1400 into first part, right? Divide 1400 into the 3 parts such a way that half part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal. So you have to divide 3 things into 3 parts. So let me give you the option also. This can be done by the help of option also. 300 is to 600 is to 500. Second is 200, 400, 800. Third option is 100, 400, 1000. And fourth option is none. So see, for example, can I find x is to y ratio? From this, can I find x is to y ratio? Is it 2/4? Can I find y is to z ratio? Y is to z 4/8. So you see 4 and 4 with this, you know ABC thing, how to find it. So here by luck you have the common thing, that is x is to y is to z. If I need to find, it is 2 is to 4 is to 8. Luckily you don't have to use the other Brahmas, second Brahmas. If you remember, if A is to B, B is to C,
C is to D, D is to E, and you have to find the continued proportion. A is to B is to C is to D is to E. You know numerator 1, numerator 2, numerator 3, numerator 4. Denominator 1, numerator 2, numerator 3, numerator 4. Denominator D1, D2. सब भूल गए, कुछ थ्योरी याद नहीं. अंडरस्टैंडिंग. सो इट्स वाज वेरी इजी क्वेश्चन. तो 2:4:8 आ गया. अब क्या आप इसका अब आप क्या सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन देख के? अगर नहीं कर सकते ऑप्शन देख के तो मुझे साफ साफ दिख रहा है दिस इज द आंसर. 2:4:8 इज द रेशियो. आप किसी और में देखेंगे तो 3:6:5 and this is 1:4:10. Or if you don't want to, what you do, you know that 2x plus 4x plus 8x is equals to 1400. क्योंकि हम इनको किस पार्ट में सॉल्व कर रहे थे? 3 equal parts में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. So from there can you solve this? It is 14x is equals to 1400. So x is equals to 100. So first is 2x, so that is 200. Second is 4x, that is 400, and 8 is 8x, that is 800. नहीं आया, नहीं पता चला कुछ भी. सो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की बहुत अच्छी बात यही है, ब्रह्मास्त्र यूज करना. पहला अज्यूप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा क्या? हमारे ब्रिज क्वेश्चंस आपको बहुत अप्लाई करने पड़ेंगे. आप देखेंगे because sometimes time and work, if some person X is doing some Y work in Z time, how much K person will do A, B, C work, like. So if you have that kind of relation, there you need a bridge concept. And we know what is the bridge concept, that N1 and like this, then D1 and like this, then D1, D2 like this. You know this concept or not, right? Forget it. Let's go to the next question. The next question says that divide 5000 among A, B, C, D, okay, so that A and B together gets 3/7 of what C and D get together, and C gets 1.5 times B, and D gets 4/3 times as much C. Now the value of B get is, so you need to find the value of B, where this question says divide 5000 among A, B, C and D, so that A and B together gets 3/7 of what C and D gets together. C gets 1.5 times of what B gets, and D gets 4/3 times as much of C. Now find the value of B gets it. So again I will tell you the options here, because sometimes this question can also be easily solved by the option. So I will tell you the method also. So first is 500, second is 2000, third is 1000, and fourth is 1500. So for example, let's say B value is first option 500. Let's say, okay. So you know B value. Can you find the value of C? C becomes 3/2 into 500. That is 750. Now can you find the value of D? 4/3 into 750. Now you know value of B, you know value of C, you know value of D. What is left? A. You know the equation A plus B plus C plus D is equals to how much? 5000. You know value of B, you know value of C, you know value of D. Can you find the value of A? If it is matching, now when you all together, if you see this matching, or forget about this, don't use this equation, otherwise it will match. That's the what assumption theory will fail. You use this method, then you validate with this A plus B plus C. If you are getting 5000 as an answer, means B value is 500, satisfied purely. Otherwise you know what you do, you create everything. You know one equation, A plus B plus C plus D is equals to 5000. Now you have the relations, right? Now try to convert or converge this relation into one variable. आप इस रिलेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पॉसिबल है? लेट्स सी, राइट? सो यू नो B, बट व्हाट आई नो इज C is equals to 3/2 times B. So can I write D is equals to 4/3 times 3/2 times B? So I get D as 4/2 times B. So B plus, how much is C? C is already 3/2 times B plus D. D is what? 4/2 times B. Now what is A? So now you know that A is what? A plus B equals 3/7 plus C plus D. So A becomes 3/7. What is C?
3 by 2 times b plus what is the 4 by 2 times b minus b. See, you can solve it, okay? It's not a big deal, okay? Just solve it. You will get purely in terms of b, let's say xb. So can you put b, xb equals to 5000? So from there, can you get the value of b? This x value, you know, this is what I'm saying. For example, if you are solving it, this equation becomes 9 by 7 to the 14b plus 3 4 12, 14b minus b. If you solve it from here, you get 14 upon 9 plus 12 minus 14. So you get the value from here times b for a. So put that value here. So you'll get, it's not a equation, two variables, okay? So like that you can solve it, I think. Are you getting it? Okay, let's do the next question. The next question is again like the we have chosen, right? I know I told you that whenever you see this kind of question, what approach you have to use? You have to use the assumption theory. You assume such that you will get the answer. So here it says that if p upon pq plus r equal to q upon p plus r equal to r upon p plus q, each fraction is equal to. So what I do is you take those values which satisfy this. So from this side I am seeing the value. Now you have to apply mind here. See, that is totally your assumptions. If you cannot understand that which value to take, then this is a issue. Then that becomes the issue for everyone. Like you won't be able to solve it, right? You won't be able to solve it. Let's say. So let's say p is equals to 1, q equal to 1 and r equal to 1. Now you will say or you will ask me, मुझे ये values कैसे पता चली? q1 1. See, simple है. अगर आप कोई और value ले, this becomes 1 by 2, 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 right? The first relation will become 1 by 2. The second relation will become 1 by 2. And third relation will also become what?